Hello and welcome to Healthwire Media. I'm Sneha Kumari with you, and you're watching our exclusive interactive session. This week, we are celebrating the National Nutrition Week. And for this, we are in conversation with a very renowned sports and Indian celebrity nutritionist, Ryan Fernando. Ryan is one of the synonymous name with health currently in India. He is the leading nutritionist who has worked with a lot of celebrities and big names in the country. If you remember, Amir Khan's commendable physique, which he had made for the movie Dangal, Ryan helped him achieve that figure. So he has been the guiding figure for a lot of other celebrities. That is one name which I mentioned. Other than that, he has also worked with Indian cricket team captain Virat Kohli, Kajal Agarwal, BCCI women's team, Abhishek Bachchan, and currently he is the official nutritionist for the Virushka baby. So I welcome Ryan on our show for this exclusive interactive session to give us insights on nutrition and gut health. So let's start it. And I would like to put some questions, Ryan, like this, that what is microbiome or what people should know about it? Thank you, Sneha. That was a lovely introduction. And microbiome is a very complicated word. Yeah. Kya hai? So I tell people, imagine inside your stomach, inside your intestines, inside your large intestine, there is this large city. Okay. And this large city is like any one of the cities we live, whether you're in Delhi, Mumbai, Hyderabad, or even Bengaluru, where I stay. Now, what happens is this city has different population. It has good population and it has bad population. We call this population microorganisms. And we have the good guys and we have the bad guys. Yeah. Okay. So healthy people have more of the good guy, and people who are getting older, people who have gut problems, people who have diabetes, hypertension, taking too much of medicines and all, the bad guys become more. So this whole population is called the microbiome. And scientists today are able to take a stool sample, that is a potty sample, and they are able to fingerprint the DNA of the bacteria population. So they like do a census. कि भाई तुम कहाँ से तुम lactobacillus तुम दही से आ गया oh you are food poisoning bacteria, you are staphylococcus aureus, you are causing a lot of food poisoning and all. So like this, people should know you have more bacteria cells in your body than the human cells in your body. Meaning what? You are more microbiome than human. Yes. So scientists today are asking, if we study this, can we change the health of the person? So let us understand the microbiome. Okay. So, and also, what is microbiome test? It is a very common question, or people might want to know about this. You know, Sneha, I work with a lot of Olympic level athletes, and one aspect I have to do is improve performance. Aam Aadmi will say, sir, I want to work 15 hours a day. Somebody with diabetes says, sir, how can I improve my food digestion? So the microbiome test is a stool test, and about 2 grams of fecal matter is taken and it is sent to a lab here in Bangalore city. Okay. What these guys do is they strip all the fecal matter and they isolate the bacteria in that sample. And for that population size, they will say, wow, there are so many millions of these bacteria. These are the good guys, these are the bad guys. So that is what the microbiome test is. Okay. Regarding that, my second question is that can you have, or what are the benefits the patients can take from this test? You know, we can identify it, but what are the other benefits we can get? Oh, there's so many benefits, Neha. You know, both my in-laws are doctors, and I keep telling them that nutrition is everything. Nutrition heals the body. Food is thy medicine. Now, when you put food into your body, it goes into the stomach, goes to the intestine, and this microbiome eats the food first. We don't eat the food first. The microbiome chomps on the food and breaks it down. Okay. Now, when it breaks down this food, if it is a good bacteria, it breaks it down to good molecules. If it is a bad bacteria, it breaks it down into bad molecules. For example, anxiety, depression, irritable bowel syndrome, Crohn's disease, gut dysbiosis, meaning gut imbalance, bad breath, hypertension. A lot of these are related to these bacteria fermenting right or wrong. So the question is, the people or the patients who benefit from a microbiome test can be a healthy athlete, can be my sister-in-law,
or Hmm. can even be my father-in-law, who Yes. is a 75-year-old doctor. What we get from this is Hmm. an understanding which food I should put into the body, which food I should not put into the body. For Hmm. example, in my microbiome test, Hmm. I'm not supposed to have potato in my diet. Now, where will I learn in a million years? Are potato bahut acha hai. I'm very Exactly. skinny. Yes. To put on weight, but here's the fact: potatoes don't agree with my body. Hmm. So my microbiome says if I take potatoes, the fermentation is wrong. So I tend to avoid that. By doing this, I have better health. By doing this, if I had diabetes, if I had irritable bowel syndrome, I Hmm. will improve the passage of food through my body and healing will happen. Hmm. Hmm. Okay. Uh, Other than that, are there any prevalent gut conditions among patients visiting your clinic? This is Yeah. So you know, you are what you eat is the common statement today. yes, So if you see film stars, you see athletes, they're very fit. So they watch what they eat. I don't know if you remember PV Sindhu said she's waiting to come back and eat ice cream, yes, yes. which means she knows that ice cream is not really good for her performance and her body and her Right, skin and her right, gut and everything. right. So there are a lot of people visiting our QUA Nutrition clinics with gut problems, meaning they've gone to the doctor and doctor says, hey, listen, you have a problem with your gut. Why don't you go to a dietitian? Hmm. Now, when they come to the dietitian, dietitian says, oh, you could take potatoes, you could take cucumber, but we don't know whether the signature pattern for one person is the same as the other. Let me give you a simple example in my own family. Whilst I cannot have milk, my brother can have milk. So two people in the same family have two bio-individual responses to food. So people that visit the QUA nutrition clinics are definitely people who have Crohn's, who have irritable bowel syndrome, who have what is called as diverticulitis, where the intestine begins to twist on itself, or there are pockets, Hmm. and especially people who have what is called as gluten sensitivity, allergic to gluten. Gluten comes from wheat and all; Yes. it's a protein. So a lot of people who have these problems. And people may not know this. Okay, people say I have skin condition, I need to go to doctor. Yes, you need Allergy. to go to Yeah, doctor, but yeah. I'll just cheeks on the outside. And now if I turn it inside, Huh. it becomes my mouth, it becomes my throat, it becomes my stomach, it becomes my intestine. So Yes. any gut problem like Hmm. eczema, psoriasis, rosacea, vitiligo, which are skin conditions, Hmm. are related to the health of your gut. So even these patients turn up at QUA Nutrition because they're like, but what is rosacea or my dry skin or my blood coming from my skin or even acne? Teenagers come to us and we tell them do the microbiome test, Hmm. and the microbiome comes back saying don't eat peanuts, don't eat milk, don't eat wheat. There are 260 plus foods. Okay. So suddenly, when I turn off those foods, 20, 30 days later, the kid, the teenager, or Hmm. the person with the skin disorder, or the Yes. person with the irritable bowel syndrome is saying, you know what, I feel much better. But then there's a difficult question: Okay. how long do I need to do this diet? Exactly. And then Exactly. my answer is, it's not my diet. It's your microbiome is saying, beta, ye mere ko mat de do. But Correct. people are no. All my life I ate bengan ka barta. How you can stop me from eating bengan Right. today? I'm like, I am not stopping you. Your Yeah. microbiome has gone in a certain way, which Hmm. has not allowed you to accept that food. Yes, but from that, I would like to take that. Is it really necessary that you have to like continue like, or how is there any kind of you know thing from which it can just get normal, or it can So get back? the question I ask people, Sneha, is what is normal? Yeah. Is eating oranges every day of the year normal? uh, What am okay. I mean by that? Oranges traditionally were grown only in a season. Yeah. So you ate it only for 1 month, a Fine. year, or 45 days. Today we Yes. eat it throughout the year. Are you Yeah. putting an imbalance on your gut? So when Correct. people come to me and say that I want to eat certain types of food, I ask, you may have married into a new family in another part of the world. Hmm. Part of the food is not part of what your bacteria wants, or Hmm. genetically what you have inherited from your parents. You're not supposed to eat that food. Right. Right. So Right. the response is the new normal Hmm. is understanding specifically what makes your body click thumbs up and Yes. what makes your body go into thumbs down. In the Yes. olden days, Sneha, people used to not complain about their potty, about their gut. They used to suffer silently.
with Google awareness, with channels like yours, which create awareness, people are saying, oh yeah, I have constipation. If I do the microbiome test, I can figure out which bacteria are causing my constipation. I had an 84-year-old Babaji who had constipation all his life. All we had to do was remove carrots, gajar. Where in a million years will I know as a nutritionist, Yeah. celebrity nutritionist? Oh, I know this, I know that. But how will I figure out I have to remove gajar for this Babaji so that Yeah. his potty gets better? But it is called scientific progress. Unfortunately, if science is saying you should not eat it, I can't tell you that, okay, once I've done it for 3 months with you, then you can go back to your old ways. If you go back to your old ways, the gut will say, hey, boss, the Gunda bacteria can come back. He's gone back to Yes. his old eating habits. So Yes. people need to make changes. या सो ओनली मेरा सवाल ये था कि ओनली चेंजेस करने से क्या ये मतलब ठीक हो जाएगी, या फिर आर देयर एनी मेडिसिन्स व्हिच यू प्रोवाइड, और आर देयर एनी मेडिकेशन व्हिच इज नीडेड फॉर दिस अदर देन? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन स्नेहा। देखो, हमारा जमाने में आज तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो तो इंग्लिश मेडिसिन है। पुराना जमाने में आयुर्वेदा था। आयुर्वेदा का मतलब हमारा जो हर्ब्स, हमारा तो डाइट कपा पीता हुआ था। सिंपल वे टू आंसर दिस क्वेश्चन, अगर आपके शरीर के अंदर कुछ डिजीज है, वेरी बैड प्रॉब्लम, देन यू शुड टेक मेडिकेशन। बट मैं ये सवाल पूछता है आपका सब व्यूअर्स की, कैन द प्रॉब्लम ऑफ योर्स बी बिकॉज ऑफ फूड? अगर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ फूड, तो कल्प्रिट फूड ही है, को उसको चेंज करने का। आर देयर मेडिसिन्स एंड आर देयर सप्लीमेंट्स? यस, मेडिसिन शुड बी गिवन बाय द गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट. But I ask this question, do you want to get so bad that you want to go to the gastro doctor and take medicine? क्योंकि मेडिसिन आपके शरीर के अंदर नहीं होता है। मतलब जैसे मेरे खून के अंदर विटामिन सी है, विटामिन डी है, ग्लूटामिन है, विटामिन ई है, लेकिन एस्पिरिन नहीं है, ब्लड थिनर नहीं है, जो पेन किलर नहीं है, पैंटॉक डी नहीं है. दीज आर ऑल फॉरेन मॉलिक्यूल्स. सो माय रिक्वेस्ट टू पीपल इज, आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या मेरा जो जितना भी तकलीफ हो रहा है, हाँ डॉक्टर के पास जाने का है, लेकिन डॉक्टर जाने के बाद क्या मैं खुद मेरा डाइट के अंदर मैं शर्लॉक होम्स इज इन्वेस्टिगेटर, कैन आई बिकम अ शर्लॉक होम्स ऑफ माय ओन डाइट एंड फिगर आउट कि क्या खाने का चीज मेरे को अच्छा करता है और क्या खाने का चीज बुरा होता है. जैसा स्नेहा, इफ यू हैव योर ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव, my grandparents are no more, but I remember my granny used to say, no, I don't want to eat this food, no, I don't eat this food. मतलब जो विजडम होता है वो कुछ खाना नहीं खाते, लेकिन जब हम यंग यूथ में है ना, बिफोर 40, जो भी अंडे का हम लोग गार्बेज ट्रक है डाल दीजिए. जी बिल्कुल. Okay, so don't become a garbage truck all your life. Choose the correct foods. And one thing for people who are suffering, Sneha, अगर ये मैं मुफ्त का एडवाइस दे सकता हूँ, there is no food that will suddenly cure your body. जैसा मैं बोलता है ना, कैरेट बहुत अच्छा है, लेकिन it can cause negative, so it's personalized. But I can definitely tell you, going organic will improve digestion, irritability issues in people. जिसके पास पेट में प्रॉब्लम होता है, प्लीज स्विच टू ऑर्गेनिक, बिना पेस्टिसाइड, बिना फर्टिलाइजर, बिना इंसेक्टिसाइड. जो जितना फूड के अंदर दाल चावल हमारा सब्जी जो होता है, अगर हम लोग ऑर्गेनिक परचेज कर सकते हैं, काफी मतलब वी विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट और शांति मिलेगा. जी. Okay, I have few more questions, Ran, regarding this. That is, how can someone identify that their gut health is poor, and what are the common symptoms? I think this is very important question. Everyone would like to know. Very good question. क्योंकि ये सवाल मेरा 8 साल का बच्चा भी पूछता है कि बेटा आज पॉटी अच्छा हो गया? तो पहला जो होता है, when I tell people, क्या तुम्हारा पॉटी अच्छा होता है? हर दिन जब संडास जाता है, is your number 2 हैपनिंग? मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन होता है, दिक्कत होता है, मतलब वो तो प्रॉब्लम होता है. अगर पॉटी अच्छा होता है, लेकिन अगर पॉटी होता है और अच्छा होता है और एक्सप्लोसिव होता है, जैसा लूज मोशन या पॉटी फॉर्मेशन नहीं होता है, देन पीपल शुड से दैट कुछ तो प्रॉब्लम होता है. अगर गैस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो डकार ज्यादा होता है, या योर पासिंग गैस ज्यादा होता है, तो और जो हिंदी में स्मेली क्या बोलते हैं आपको पता है ना, स्मेली गैस होता है. देन कुछ तो फर्मेंटेशन डाइट के अंदर या आपका बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम होते हैं. आपके मुंह के अंदर बैड ब्रेथ,
जी जी। ओके। दूसरा है अगर एंजाइटी और डिप्रेशन है, अगर हमेशा उदास होता है, इट कुड बी अ गट प्रॉब्लम। अगर आपके स्किन के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन जैसा 40 साल में पहुंचता है तो काला काला वाला पैच आता है, उसमें गट का प्रॉब्लम होता है। अगर पिंपल्स होते हैं टीनेजर के लिए, वो तो भी गट का प्रॉब्लम होता है। सब लोग बोलते हैं नहीं 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 गट का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं सब डॉक्टर लोग को बोलते हैं कि सर microbiome testing is showing that at the gut level there is a kujli, there is a jagada happening, या and the patient has to think कि आज मेरा नींद अच्छा नहीं आ गया, हाँ वो डाइट के अंदर है। आज मेरा नींद अच्छा नहीं हो गया, मैंने कॉफी पिया और नेक्स्ट डे मेरे को लूज मोशन हो गया, तो वो कनेक्शन करने का है, जॉइन द डॉट्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आपके पेट के अंदर पेन होता है, जैसा किसी ने आपके स्टमक के अंदर दे पुट अ नाइफ, चाकू लगाया, या शूटिंग पेन, नहीं तो ट्विस्टिंग पेन, कोई आपको पकड़ लिया और ऐसा ट्विस्ट कर रहा है, तो स्टमक के अंदर ऐसा वाला पेन होता है, उसको इंग्लिश में बोलता है ग्राइपिंग। हाँ हाँ हाँ। So if you have griping pain or you have discomfort, मतलब हमेशा गैस होता है या सिर्फ पेन होता है, क्रैम्पिंग होता है, मसल स्टार्ट्स क्रैम्पिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, इसका मतलब है आपके पेट के अंदर कुछ तो कुछ प्रॉब्लम होता है। वर्स्ट वर्स्ट इज जब आपका पॉटी काला होता है, तो आपका स्टूल ब्लैक होता है, तो दैट इज ब्लड इन द स्टूल्स, या यू सी ब्लड इन योर स्टूल्स, इट कैन बी हेमरॉइड्स, पाइल्स, फिस्टुला। दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स की जहां आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने का है। कंसल्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर आपके फैमिली के अंदर, समझ लीजिए मेरा पापा के पास कुछ गट का प्रॉब्लम है और ये चीज खाते हैं और ये प्रॉब्लम होता है, आई आस्क ऑल द चिल्ड्रन इन दैट फैमिली, तुमको भी ये सेम प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक भी हो सकता है, बिल्कुल। ओके, सो काफी काफी सारे इंडिविजुअल्स को मैं इंग्लिश में बोलता है डेलिकेट स्टमक। डेलिकेट स्टमक, या कोई लोग जो होता है ना, कहाँ भी जा सकता है, ढाबा भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, खा सकते हैं, भरपूर खा सकते बिल्कुल हैं, कुछ नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल। उनका जो पेट होता है, मतलब गार्बेज ट्रक प्रोसेसर जैसा होता है, राइट। पूरा साफ सुथरा होता है। हाँ हाँ। लेकिन आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी डेलिकेट डार्लिंग स्टमक, तो मैं ग्लूटेन नहीं ले सकता हूँ, मैं चीज नहीं ले सकता हूँ, मैं सिर्फ कैमल मिल्क पी सकता हूँ। तो जब मैं राजस्थान जाता हूँ, तो जयपुर जाता हूँ, मैं बोलता है भाई मेरे को चाय चाहिए दूध के साथ, कौन सा दूध, कैमल दूध के साथ, क्योंकि मेरा जो ब्लड टेस्ट बोल रहा है कि बफलो मिल्क एलर्जी, गोट्स मिल्क का एलर्जी, गाय का एलर्जी, सबका एलर्जी होता है, लेकिन मेरे को कैमल एलर्जी। मेरा दूसरा क्लाइंट कल, शी वॉज नॉट एलर्जिक टू बफलो मिल्क, तो तुरंत उसने हस्बैंड को कॉल किया मेरा, बिकॉज शी वांटेड अ न्यू बफलो फॉर बफलो मिल्क इन हर चाय। ओके ओके, ऑलराइट। सो ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, या फिर आप इसको लुक फॉरवर्ड करें कि आप हर चीज पे ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन or is there any age restriction for this microbiome test, or anybody can do this? So we have had children who are 1 year old. We are doing the microbiome test क्योंकि उसको कॉलिक होता है, बहुत गैस होता है, हमेशा रोता है, मम्मा का दूध नहीं पी सकता हूँ, फॉर्मूला का दूध नहीं पी सकता हूँ। बाद में उसका जेनेटिक टेस्ट करता है, उसका माइक्रोबायोम टेस्ट करता है, और हमको जानकारी मिलती है कि उसको दूध नहीं दे सकता है। Okay. तो छोटा बच्चों को क्या देते हैं, तो उनका पूरा डाइट हम लोग चेंज करते हैं। सो यू कैन स्टार्ट एट अ वेरी वेरी यंग एज एंड ऑफ इवन 2 years of age, and you can go up to like my oldest client right now, वो 74 में ये टेस्ट कर दिया। यू कैन डू 74 75। लोग मेरे से पूछता है कि क्या फायदा है इसको करने के लिए, जब हम बूढ़ा हो गया, हमको पता है हमको क्या खाने का है। जी जी जी। लेकिन you should find out scientifically which are the foods which are thumbs up, which are the foods which are thumbs down. जो thumbs down है उसको निकाल दो, जो foods thumbs up है, समझ लीजिए गार्लिक आपका thumbs up फूड है, तो हम उस गार्लिक को हीलिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा आपके खाने के अंदर लगा सकता है, सो दैट यू नो यू कैन ईट मोर गार्लिक। लेकिन अगर आपका गार्लिक thumbs down है, लहसुन डाउन डाउन है, तो आपका दोस्त बोल दिया हाँ लहसुन बहुत अच्छा होता है, आप 80 years का है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लहसुन ले लो, आप लहसुन ले रहे हैं और उस तरफ हार्ट अच्छा हो रहा है, दूसरा तरफ पेट खराब हो रहा है। खराब हो रहा है, जी। So I think microbiome is the key basically, or we can say a kind of very important एक औषध में वो कह सकते हैं कि हम एक ऐसी टेस्ट है जिससे हम ऑलमोस्ट सब चीजों का आंसर हमें मिल जाएगा, या फिर हमें हमारे गट के बारे में एटलीस्ट पता चलेगा कि what is there and what is not, or what should we do about it. I think सारे प्रॉब्लम्स का हल हमें माइक्रोबायोम टेस्ट दे सकता है।
So, sir, lastly, I would just like to take some health tips from your nutrition tips from you regarding this COVID situation which is going on. Yeah. So basically during COVID आपका immunity boost होना चाहिए. एक दिक्कत हो गया इस 2 साल के अंदर, सब लोग खड़ा ले रहा है, उसमें हाँ, अदरक है, उसमें टर्मरिक है, उसमें पेपर है, उसमें जो भी मसाला का स्पाइस होता है सब लोग उसके अंदर डालते हैं और लोग लेते हैं. एक चीज मैं सबको वार्न करने का है कि ये जो खड़ा आप ले रहा है ना, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन या ज्यादा क्वांटिटी में ले रहा है, आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा तंदुरुस्त नहीं होता है, जी जी आपका गट सिस्टम बर्बाद हो रहा है. जी क्योंकि these spices and these masalas or these what you call as superfoods are जी being given in too much quantity which is aggressively attacking your gut. So first exactly. tip is कड़ा तो अच्छा होता है लेकिन जी, don't do अपनी more than क्वांटिटी 50 ml. पे ध्यान दें. क्वांटिटी में ध्यान दीजिए. जी. My best friend in this period has been आंवला, जो विटामिन सी ज्यादा होता है, और सबको विटामिन डी का टेस्ट करने का. इंडिया में 95% ऑफ द पीपल आर विटामिन डी डेफिशिएंट, डी फॉर दिल्ली. ठीक है, तो विटामिन डी अगर आप खून का टेस्ट कर रहा है, उसमें अगर कम आ जाएगा, सब लोग रहा सर मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, 30 आ गया, पास मार्क मिल गया, तो स्नेहा रेंज है 30 to 100. तो सब लोग 31 32 में बहुत खुश होते हैं. अरे भाई, अगर जिंदगी में आप बॉटम ऑफ द क्लास है में आप खुश है या टॉप ऑफ द क्लास में होना चाहिए, तो इम्यूनिटी के लिए आपको विटामिन डी 50 to 60 लेवल में होना चाहिए. उस विटामिन डी डाइट के अंदर आप कुछ भी कर सकता है, लेकिन विटामिन डी ऊपर नहीं होता है. विटामिन डी इज अ सनशाइन विटामिन, कुछ नहीं होता है, ऊपर नहीं जाते. यू हैव टू टेक अ सप्लीमेंट. Please contact your family physician, family doctor, family dietitian for the prescription of vitamin D, क्योंकि हर केस के अंदर अलग अलग वाला का डोजेज होता है विटामिन डी. लेकिन प्लीज 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 एवरीवन, विटामिन डी कैन प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट लो इम्यूनिटी. इसके अलावा आपका डाइटिशियन या आपका डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर दे सकता है आपका विटामिन, मल्टीविटामिन. क्योंकि क्या होता है स्नेहा, अभी इस लास्ट 2 साल के अंदर सब लोग डॉक्टर बन गया, खुद अपने आप प्रिस्क्रिप्शन करते हैं. मेरा दोस्त आता है, मेरे को बोलते हैं सर यू टेक दिस, यू हैव दिस. मेरे चड्डी वाला दोस्त बोलते हैं रायन, हैव यू ट्राइड आउट दिस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हर्ब दैट हर्ब. आई एम लाइक बॉस, आई लुक एट this will give me impotency man if I take this. So people are trying to do googling. Okay, people are trying to do googling. Let me tell you something, even Google employees go to dietitians and nutritionists. I know this because they come to us. Obviously. At the end of so please don't Google up your symptoms. Please don't Google up nutrition. But turmeric, आपका जो खिचड़ी, आपका सूप, आपका सब्जी जो बनाते, अगर क्वार्टर टीस्पून का हल्दी है उसके अंदर हर दिन के अंदर, वो आपको कुछ प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर देगा. लेकिन मैम सबको बोलने का है कि वैक्सीनेशन इज द ओनली वे टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम डाइंग. सो प्लीज इफ पीपल आर, मेरे काफी सारे लोग आते हैं नहीं मेरे को वैक्सीन नहीं लेने का, प्लीज 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 टेक द वैक्सीन. इफ द बिग पीपल का मतलब नहीं हमारा पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटी नहीं, इफ द डॉक्टर्स, जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर लर्नेड लोग होता है. अरे उसके पास डबल पीएचडी है, मेडिसिन कर दिया, एमडी कर दिया, वो लोग इतना मतलब बुद्धिमान लोग है, वो लोग इंजेक्शन ले रहा है. हम आम आदमी ऐसा पूछते हैं, हाँ हमको मास जाने का है क्या, वैक्सीन लेने क्या, इसमें दिक्कत होता है, इसमें ये क्या होता है, थोड़ा नॉलेज मिलता है, हम सब लोग आइंस्टाइन बन गया वैक्सीन के अंदर. सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि भाई वैक्सीन ले लो. सर कौन सा चॉइस का वैक्सीन? अरे भाई हमारा देश में कोई चॉइस नहीं है. वहां हॉस्पिटल में जाओ, हाथ दे दो, वैक्सीन लगा दो, प्रोटेक्शन मिलेगा. दिस इज माय मैसेज टू एवरीबॉडी. ओके, आई थिंक मेरे व्यूअर्स को काफी कुछ इंसाइट्स मिला है इस कॉन्वर्सेशन से, एंड एवरीवन शुड गेट वैक्सीनेटेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो गो एंड गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल, एंड कीप योर गट हेल्थ healthy, as Ryan said, and follow what he said. So thank you so much, Ryan, for joining us and giving us your important time. Thank you so much. God bless you. Bye bye. Bye bye.